these are the inputs, and you can say now we are using the hidden layers. In the MLP, you have seen this part, means you have the hidden layers, you have the input parts, and you have the output part. Okay, so this part you have already done, already seen in NLP, and also you have seen means this may be a one perceptron. Not only the input, maybe the input is here, the one perceptron may be here. So already we have discussed this type of thing. Yes, everybody understand this part? Okay, good. Yes, sir. Now I am telling about the terminology, what terminology we are using. Input we are showing with the x1, xi1, xi2, xi3, xi4 like this. Now you can say this is your weight. This is, you can say this connection is 1 and this is the B1. So this is the 1, 1. So you can take the name 1, 2 and 3. Okay, so this connection may be W12, this connection may be W13. Like this, you can write this is the X2, so you can say this is the W2 and it is connected to the W1. Yes, so this terminology is clear to everyone. What is the name of this one to this one? That is the W22. Okay, this is the W23. This is the W31, W32, this is W33. Like this, you can understand what is the W. This is the weight. Or in the MLP, in the last class, this red color is not, black color is not visible for me. Red color आपको दिख रहा है अपने screen पे? It is okay? Okay. So Yes, already sir. you have seen like this, the equation wise equation bars like Wx1 plus Wx2 or some bias. Okay, some bias like you can write one or two. So here you can see in the perceptron you are writing the bias. So this is bias the V11. This is B12. This is B13. Okay. So in the circle, whatever you are writing, that is the bias. This is the bias. This is the bias. So I am representing in the outside. I can put like this also. This is B11, but I am putting the bias like only in the circle. Yes, everyone is okay with this part? Yes or no? Okay. So I'm continuing this part. Now you just tell me, this is the B1. So I can write the equation Wix1 into W11 plus V11. This is one equation for this thing. Yes. Yes. So maybe there is a one output here. If you will see, that is the output you can write, that is the O11. Okay. This is the output, that is the O12. This is the output. This is O1, O21. This is the output, that is O22. This is the output O31. This is the output O32. This is the output. Yes or no? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Acha, one question is there. Why you are telling this is the hidden layer, even though you can find out the output here? Most of the time in the interview, people says we can't calculate the output of the hidden layer. That's why we are saying that is the output. Yes, most of the time I heard the this answer. This is the answer for hidden layer. But if you are able to see, you can get the answer for every layer. You're getting the answer is in this layer. Yes or no? Then why we are saying this is the hidden layer? Anyone? Anyone can comment on this? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा हुआ है, सो दैट्स वाई। किसी का कोई भी पुराना ज्ञान जिस वजह से वाई वी आर सेइंग दैट इज द हिडन लेयर? यस और नो? कोई तो बोलो। No एनीवन? idea. No idea. Okay, so the reason you have the output in this layer, but you don't know how much the contribution of this output in the uh, in the last output, what you are saying, that is the prediction output. Okay, what should be the means what should be the partition, you can say, in the predicted output you can't calculate in this layer.
Okay, you calculate the output here because that is normal mathematics. You can calculate this part, but how much this portion will be contribute in the prediction part, that will you can't predict. That's why we are saying these are all are the hidden layers. Okay, you know the input, you know the output directly. Whatever the contribution in this part, you don't know. But if you will see the what is the output in this layer, you can calculate. Yes, that part is clear to everyone. Okay, so now I am going for the further thing. Again, you can understand this is the bias. So, Acha, now you just tell me. Sir, sir, can you please Yes. repeat why we take hidden layer? The contribution means what is the portion uh, include in the predicted output. Predicted output, this one. You can't calculate how much portion of this input will be will be given to this output. You can't predict this part. Okay, कि इसका कितना portion यहाँ पे जाएगा, you can't predict. Maybe इसका ज्यादा Okay. portion जाए, कम portion जाए, whatever. So that's why we can say this is the hidden layer. Yes, now Yes, clear? sir. Okay, Yes, sir. okay. So now I'm asking, yeah. So now you just see this is the four nodes, 1, 2, 3, and 4. Okay, four nodes you have here. Here you can say, sir, that is a 3 perceptron. Yes. Here you can say that is a 2 perceptron, and this is the output layer. You can say, sir, that is the 1 perceptron. Now you just tell me first when I will teach you the MLP, only the weights and biases. These are the things you have to update. Yes or no? That part is clear to you? Means you will update the W's, you will update the V's. Yes? Yes, sir. Yes. So W, because this part is given, this output is given. So bias and weights you will update. So in this figure, how much weights and biases you will update? You can calculate this part. How? So now, if you want to calculate how much parameter you will update in a given particular ANN architecture, you can go with this way. So you can see this is the four nodes and this is the three nodes. So there are connections with the weights. So if you will multiply for first layer, I am telling about. So this is the 4 cross 3. That part is okay. So 12 connections should be there. So 12 weights will be there. W will be 12 and 3 vices will be calculated this one. Okay. So that is the plus 3. ओके इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी अगर O11 की इक्वेशन है तो यहां से 3 आएंगे तो 12 कनेक्शन यहां से आएंगे और 3 वाइसेस यहां से आएंगे सो टोटल नंबर ऑफ पैरामीटर्स विल बी 15 दिस इज द बायस थिंग सेकंड लेयर नाउ यू जस्ट टेल मी फॉर द सेकंड लेयर मैं W1 लिख देता हूं यहां पे दिस इज द फर्स्ट लेयर फॉर सेकंड लेयर व्हाट विल हैपन दिस इज द 3 दिस इज द 2 हाउ मच कनेक्शंस आर देयर 6 प्लस हाउ मच वाइसेस टेल मी the biases is 2. Yes. So how Two, much is the two, sir. number? Yes, this is the Uh, 8. 8. 8. Very good. Now I am talking about this third layer part. 2 into 1. So you 1. can see these are the two connections and vices. That is one vices. That is 1. Only 1. Yeah. So 2 plus 1. That is the 3. That So is how 3. much is there? The total number 26 26. होगा 26 26. that is a 26 parameters you have to update so now you can understand a parameter okay now you can understand any type of architecture is given to you you can calculate how much parameters you can how many parameters you have to update that part you can calculate yes or no everyone is clear on this point please tell me Yes, sir. online वाले बच्चे भी Yes, sir. yeah okay very good so अगर यहाँ पे 4 नोड होते ओके तो यू कैन कैलकुलेट यहाँ पे 4 होते यहाँ 3 होते देन सिचुएशन क्या होती दैट 4 क्रॉस 4 प्लस 4 4 क्रॉस 2 प्लस 3 फिर 3 क्रॉस 1 प्लस 1 that will be the number of parameters so first you have to understand in a particular given ANN architecture how many parameters given to you to update अगर आपको यही नहीं पता होगा तो फिर आप कैलकुलेट ही क्या करोगे ओके सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना पैरामीटर मेरे को अपडेट करना है दैट पार्ट इज क्लियर आई थिंक
यस नाउ। अच्छा नाउ अभी तक मैंने फॉरवर्ड पैरामीटर और इनकी बात नहीं की है, मैंने जस्ट आपको सिखाया कि ये आर्किटेक्चर है, दैट इज द टर्मिनोलॉजी ऑन हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड प्रोपिगेशन, ये मैं हटा दूं या लिखा रहने देता हूं, ओके। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड प्रोपिगेशन मींस the input is flowing in the forward direction like this, okay. So that is the beauty of algebra, or you can say mathematics. Only the dot product will use for understanding this thing, because in this part when you are doing w2 w transpose x plus b, all the time this situation is coming, and then in that part you have the one activation function, you can say, that is a sigma. You can take the sigmoid function or linear function or any type of function you can take here. So this is the line equation again. So this is the weight and input product, dot product, and something you are adding. Now I am showing this part in the vector form to you. So like this you can understand now. This is the first layer, W11. You can take this figure. This is the W11. Okay, this is the first output or input, and we are trying with this thing. So this is the connection. इसके लिए मैं निकाल रहा हूँ. So what is happening? If you will see this W11, W12, and W13, when we are going row wise, so you can understand then what is happening. We are talking about these connection, these connection, three connection. W11, W12, and W13. Yes, everyone is clear in the matrix how we are going W11, W12, and W13. When we are going in this direction, the column wise direction, so you can understand. Now we are taking the connection. मैं अब इसको हटा दे रहा हूँ. We are taking the connection of this one. This connection is reaching to first node, this connection is reaching to first node, this connection is reaching to first node, and this connection is reaching to first node. So this is W11, this will come to W21, this will come to W31, this will come to W41. So you can see here W21, W31, W41. So in this way, you can see when we are putting the weights. So this is the connection going out from the one node. This is the connection that is reaching at the one node. Okay, in hidden layer node. So this type you can manage the weight matrix. Is it clear to everyone? How we are managing Yes, sir. this weight matrix? That part is Yes, clear? sir. Okay, very good. So this is the input. Now the equation is like that. Sorry. The equation is like that, W transpose X plus B. Okay. So we are transposing that part. Okay. And we are putting the input value. Input value is given to you, that is the xi1, xi2, xi3, and this is xi4. What is the input that is given? After that, you can add the, you are talking about the first layer only. We are talking till now here in this part. Okay. So what is happening? So in this part, already I have told you three vices you have. Yes, because this is the 12 connections and three vices. So three vices is B11, B12, and B13. So when you will multiply, so this is the equation W2X plus B. We are doing the same thing. So you will get this part, you will multiply this thing, you will get this part and this part, and this is the plus one. You will add, so after adding, you will get this B11, B12, and B13. Okay, this type of equation you will get. Now I am saying when I am reaching in this part, in this value, what I am doing, I am taking one sigma. Means I am whatever the answer of this, the prediction will come when I am putting one function here. That function may be sigmoid or whatever till now. Okay. So यहाँ पे भी एक चीज बता दूं, when you are talking about the ANN can be used as a regression also. So when I am talking about the regression, the sigma will be linear always. Okay. When I am talking about the ANN work as a classification, okay, then it may be your sigmoid, or because sigmoid maybe you can use for the binary classes. When the classes is more, means that is not only one output. If the output is more than one,
So already I have told you one function, that is the softmax in the logistic regression. So you can use the softmax function. Yes. So when the multi-class problem, you will use the softmax. For the binary, you can use the sigmoid, or you can use the step also. In the when you are using ANN as a regression, always you will use at the output level. I am not saying at every level. I am saying at the output level, you will use the linear. When you are dealing with the regression, you will use the linear thing. Yes, everyone is clear on this point? At the output level, when we are talking about the classification thing, then you will use the sigmoid, step, or softmax when the class is multi-class problem, for the multi-class problem. Till now, everyone is clear? Yes or no? Please Yes, sir. reply. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So what I am saying, yeah, what I'm saying, when I am applying this thing, sigma to these function, this is also written W2x plus b. This is again WTX plus b. This is W2. So you are getting the three answers here. So you can see in the figure also, the one answer will be your uh this one. This one something. This is 012. This is 21. This is 22. This is 2 3 1. This is 3 2. Okay. So here you can see this is the somehow, sorry, first layer. Okay. So this is the 011, 012, and 013. So you will get the three answers here. Okay. So that is 011. No, sorry, this is 011 again. I am wrong here. This is 011 and this is also 011. Okay, this is 021, this is 021, this is 031, this is 031. Yes, everyone is clear on this point? Yes or no? ये connection दो बार दिखा रहा हूं, but output is same. Yes, everyone is clear? Yes, sir. Okay. So in the short, I am writing this is 011. You are getting the answer in form of 011, 012, and 013. So whatever the answer you are getting of this layer in the first layer. Now, if I am talking about the second layer. Now you just tell me what will happen. If I am talking about the second layer, again some input, some weights will be there. Yes, yes or no? Yes, so we can represent this weight like a, this is the second layer. So I am writing here W211, W212. Okay. So I can write this is W11 second layer. This is W second layer 12 like this. Understand? Everyone? Yes or no? किसी को डाउट है यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में? क्या कोई नहीं बोल रहा? Everyone is clear? यस सर, यस सर। सर वो अनम्यूट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके ओके, ओपन करने में टाइम लगता है। ओके, सो दिस इज सेकंड लेयर। अगेन यहाँ पे थर्ड लेयर जब आएगा, दिस इज 1 1, दिस इज थर्ड लेयर 1 2. सो टर्मिनोलॉजी ऑफ वेट्स इज क्लियर, आई थिंक। यस, सो नाउ यू नो व्हाट इज द इनपुट। इनपुट इज O1, O12 और O13, बिकॉज यहाँ से इनपुट क्या निकल रहा है, दिस इज O11, this is also O11. Okay, so you can see here again we will take a matrix of weights and multiply with the whatever the input. This is the first layer output, now will work as a input. Yes, in the second layer what is happening, what is the output of first layer, that will be work as a input of second layer. So this is the input. Now you can multiply and two vices थे आपके पास, this is the vice, this is the vice. So you can write this is the vices, you can put. Now you can take the transpose, you will multiply again, you will get the equations. Okay, and if you will get the same I am doing, if you will put the some function here, some activation function here, you will get the output. This output will be O21 and O22. For the next layer you can say, for the next layer sir, this will be the output. This is the O21, this is the O22. Yes, this is the output, this is the output. Clear everyone? Now directly you will multiply these things and you will get the this O31.
that is the output, or you can say predicted one. So either you can write in a form of layer, this is the W311, W322, and this is the output. You will take the transpose and multiply with the bias. You will take this one, and this is your predicted output. Yes, everyone is clear? So this is what is happening every time you have some input, you are taking the multiplication with weightage and you are adding y's, you are getting some output, you are again making this output as an input, and you are using again and again algebra, normal mathematics. So you are using again and again equation w2x1 plus b, and you are going through with the activation function, and you are getting the output like this. So this is propagating in the forward direction. Likewise, you are getting the whatever the output of this ANN structure. Is it clear to everyone? Yes. So you are getting the output like this. Yes, sir. Okay. Yeah. So everyone is clear कि forward propagation कैसे होता है? किसी को डाउट तो नहीं है अभी तक यहाँ पे? Yes. नो सर। No, Okay. sir. Okay, cool. अच्छा, मैं अभी इसको इस तरीके से बोल सकता हूँ. आई एम सेइंग द आउटपुट ऑफ द फर्स्ट लेयर इज A1 बोल देता हूँ. A1 आउटपुट ऑफ द सेकंड लेयर इज A2. नेक्स्ट पेज पे है A2, एंड आउटपुट ऑफ द थर्ड लेयर इज A3. ओके, लास्ट वाला आउटपुट को बोल रहा हूँ. ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस. दिस इज फर्स्ट नोड को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, दैट इज द A नॉट. दिस इज A1, दिस इज A2, this is A3. Like this outputs को बोल रहा हूँ, इसको A नॉट बोल दिया. So how can you write in this form? So just understand, this is the weights. ठीक है, A0. मैं इसको आउटपुट बोला, ये इनपुट की तरह वर्क कर रहा है अभी. So you can write A naught into W1. जो भी layer 1 में आपके weights हैं, you can use the W1 plus first layer का biases, and you can put this thing into the sigmoid function or activation function. You will get the A1. First layer का output you will get the A1. Now first layer output will be work as a input in the second layer. So you will add the weightage of the second layer with the input of the first layer, and again the biases of the second layer. Again you will put a sigmoid function or activation function, you will get the output of second layer. This is the A2. Yes, everyone is clear? Same here, you will use the output of the second layer as an input in the third layer. You will multiply with the weights of the third layer. You will add the biases here, and again you will put a sigmoid function or activation function. Then you will get the output, because only 3 layers are there. So you can say this is the output. This is, you can say, by predicted. Yes, everyone is okay with this thing? Same मैं यहाँ पे Sir. लिख सकता हूँ ये. Yes. Yes, everyone is clear on this point? Yes, sir. Yes. Yeah. So see this part. This is again written for A1. अगर मैं A1 मान रहा हूं तो ये वही लिख दिया, ये वाला पार्ट. अब इसको मैंने क्या किया, A1 को मैं पूरा ओपन कर रहा हूँ. ये A1 को यहाँ पे ओपन कर देता हूं, तो आपका W2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. B2 को मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे. यस, इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ. सो अगेन दिस पार्ट, और यहाँ पे सिग्मा ले लूं. दिस पार्ट विल बी योर A2. अगर फिर मैंने क्या किया, थर्ड पार्ट में A2 को पूरा ओपन कर दिया, यहाँ से यहाँ तक A2 हो गया. यस, ठीक है. इसमें W3 को मैंने मल्टीप्लाई किया और B3 के बाइसेस को ऐड कर दिया, फिर सिग्मॉइड से निकाल दिया, तो ये आपका आउटपुट जनरेट हो गया. तो यू कैन सी दिस इज द चेन ओनली. इन द लेयर वाइज लेयर you are just multiplying the thing. Okay, you are making this thing also. The so basic thing is this, and you can propagate this thing with the activation function, and you are getting the answer, and that output will be input for the next layer. So you can say, sir, this is just a propagation of input in the forward direction. Propagation spelling. Propagation of inputs in forward direction. Okay, I think that part is clear. ये पार्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए. Yes, everyone is with me for this thing? Sir, Yes. I have a question. Sir, we have Yeah, to write sure. that full equation that you have seen in the A3 part. ये वाली इक्वेशन, ये Last one. ये आप उसके लिए पूछ रहे हो, प्रोग्रामिंग के पर्पस से पूछ रहे हो?
or something like that कि हम नो केवल नो ऊपर वाला को ही नो नो कर दें. दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अभी जब हम कोड करेंगे तो यू डोंट राइट, यू हैव नॉट राइट लाइक दिस थिंग, जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस हाउ दिस इज गोइंग ऑन। मीन्स यू कैन से बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद दिस थिंग, so we are going with this thing, again we are going with this thing, so that is the chain like of thing। तो वी आर प्रोपेगेटिंग द इनपुट, एक इनपुट से स्टार्ट किया और फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग प्रोपेगेट करते जा रहे हैं। इसको समझाने के लिए मैंने इतना ये किया है, जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो इतनी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस, यही क्वेश्चन था या कुछ और था? सर तो यही इतनी था. हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी नहीं होगी, वहां पे इजी है। ठीक है, और आप लोग रिसर्च कर रहे हो तो आपको स्केच से बनाने की भी जरूरत नहीं है कि आप लोग कैरास को हम लोग यूज कर लेंगे फॉर द, इसके लिए एक लाइब्रेरी है कैरास नाम से। ठीक है, दैट लाइब्रेरी यू विल यूज, वहाँ सीक्वेंशियल होता है, एक सीक्वेंशियल केवल आपको ये बताना पड़ता है कि हाउ हाउ मेनी hidden layers you will use, how many inputs you will use, and how many means input, or you can say different parameters are given there। input है, वाइसेस कितने लोगे, कितने नोड्स लोगे, ये सब बताना होता है। उसके बाद वो कैलकुलेशन अपने हिसाब से करता है। ओके, ठीक है बेटा? ओके सर, ओके. यस, but most of the time if you are using the forward propagation, that will used only for the regression purpose। classification problem forward से नहीं हो पाता, so then one more problem is more algorithm is there, that is the back propagation। okay, so अभी आप क्या हो गए, आउटपुट तक पहुंच गए। यस, अच्छा, बैक प्रोपेगेशन का देखो, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा हूं तो आपको थोड़ा सा बैक प्रोपेगेशन का थोड़ा समझा देता हूँ कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ बैक प्रोपेगेशन। ओके, छोटा सा एक पार्ट लेके। यस, होता क्या है एक्चुअली, मैं थोड़ा सा कंट्रोल थ्योरी और उसकी तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्रॉस लगा लो। दिस इज द इनपुट, दिस इज योर आउटपुट। some function is given to you in this box, some function, okay, so according to that you will get the output। okay, so you can say that is the predicted। again I am saying, I am taking one example, I want a fan जिसका rpm 5 rpm की स्पीड से वो चलता रहे, उसमें कुछ मैंने करंट और वो वोल्टेज प्रोवाइड की, यहाँ से करंट प्रोवाइड किया और वोल्टेज प्रोवाइड की। ठीक है, और वो 5 आउटपुट उसका क्या आया, उसका आउटपुट आ गया 4.9 rpm। but what is the need, the need is again 5 rpm। so what is the error, just tell me what is the error here? huh? 0.1। 0.1, yes, 0.1। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे सम फैक्टर्स हम कभी कभी क्या करते हैं, इसमें एक फैक्टर डाल देते हैं। अभी हम पूरा कंट्रोल की तरह नहीं जाता, इसमें किसी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, सम म्यू, अभी मैं म्यू वैल्यू लेता हूँ, सम म्यू वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दूं, उसको मैं यहाँ पे अगेन भेजता हूँ। वैसे यहाँ पे हम लोग वो माइनस करते हैं कि जो हम इनपुट दे रहे थे और जो मेरा आउटपुट जनरेट होके आया उसमें कितना डिफरेंसेस है, उसको मैं अगेन यहाँ पे एक और लगा लेता हूँ, दैट इज द कंट्रोलर। कंट्रोलर, सो व्हाट वी कैन डू, जो भी आपका एरर है उसको, एरर को मैं कंट्रोलर को प्रोवाइड करूंगा। कंट्रोलर क्या करेगा, अगेन उस एरर को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा कि आउटपुट आपका 5 आरपीएम जनरेट होके आ जाए। अगेन फंडा वही है, हर एक जगह हम वही देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे एल्गोरिदम को बात करके कहूँ, अगर यहाँ पे आपका ये केवल आपका आउटपुट जनरेशन के लिए आपका आउटपुट जनरेट हो गया बाय प्रिडिक्टेड, बट मैंने आपको बताया कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एरर्स, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द रिग्रेशन एरर, तो रिग्रेशन एरर के लिए आपको मैंने कौन सी एरर बताई थी, मीन स्क्वायर एरर था। MSE with MSE, most of the time you are doing this thing by predicted, and this is the thing कि square कर रहे थे, this is the MSE। so this error you can take and again you will apply कि जब तक आपका desired output y equal to y बार ना हो जाए। ओके, ये अगर हो गया तो आपका वैसे भी एरर कितना हो गया, 0 हो गया, तो आपको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ये अगर इक्वल हो गए तो -0 ही हो जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग कि आपकी एमएससी कितना हो जाए, 0 हो जाए, यही ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ये फंडामेंटल कंट्रोल का ये पार्ट भी यही करता है कि इसका एरर यहाँ पे 0 हो जाए, जो भी फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा 0, तो आपका अपडेशन बंद हो जाएगा। अगेन वही फंडा है। ओके, तो व्हाट इज हैपनिंग, अगर आपका डिजायर्ड आउटपुट नहीं आया देन व्हाट? ओके, दिस इज forward propagation is only generation the output,
But when the output is not accurate or what you want, then what will be what is the algorithm? So that is the most important algorithm for the ANN purpose, or you can say that is the basic building block for the deep learning. So that is the back propagation. So I am switching to the back propagation. So फॉरवर्ड अगर क्लियर है, क्योंकि इसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है बैक प्रोपेगेशन के लिए. वन थिंग इज फॉरवर्ड प्रोपेगेशन, सेकंड थिंग इज, कोई बताएगा मुझे, ग्रेडियंट डिसेंट. ओके, दो चीजों की ये प्री रिक्विजिट है इसके कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉरवर्ड प्रोपेगेशन एंड यू नो अबाउट द ग्रेडियंट डिसेंट. यस, एवरीवन इज क्लियर? और शायद हमने दोनों ही पढ़ रखे हैं. अभी मैंने फॉरवर्ड प्रोपेगेशन पढ़ाया, ग्रेडियंट डिसेंट फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था. सो आई एम गोइंग फॉर द बैक प्रोपेगेशन थिंग. ओके, again you can see the same structure here. I am taking only the IQ and CGPA, and this is the LPA this time. Now first I am trying to understand, I am to telling you about the regression thing. Okay, I am taking the example of the regression, not the classification. Then I will go, बहुत easy है वो, तो से एक चीज समझ जाओगे, then you can understand the second thing also. So here again I am taking the data that is IQ and CGPA and some LPA. LPA direct, that is direct values something, 3 lakhs, 5 lakhs, 8 lakhs, and 11 lakhs. When you will apply one thing, anything, or you can train this thing, you will get the direct output. पहली बार में मैं क्या करूंगा, first take anything. I am taking this 80 and 8. I will put here 80 and this 8. So input is here 80 and 8. What should be the value of this W2 in the initial stage? Anyone can tell me? In the initial stage. So what you will do, this is the first step. Zero, you can take zero or you can initialize any value. Okay. So first step is initialize the weight. You can take any weight here. Even though आफ्टर दैट आई विल टेल यू कि वेट भी हम हिसाब से लेते हैं, अपने हिसाब से लेते हैं कि अपनी एल्गोरिथम जल्दी से कन्वर्ज हो जाए. बट फर्स्ट थिंग, you can initialize any weight. You can take 0, you can take 1, you can take 100, whatever you want, you can take. Likewise, you can initialize the wise. Here, first I am initialize. Generally लोग क्या करते हैं, weights को 1 ले लेते हैं, wise को 0, या इसको 1 इसको 0, इस तरीके से मैनेज करते हैं नॉर्मली. सो फर्स्ट थिंग इज इनिशियलाइज द वेट. अगर मैं वेट को इनिशियलाइज कर दूं सभी को, तो आप इसका डायरेक्ट आउटपुट निकाल लोगे. अभी फॉरवर्ड प्रोपेगेशन में सिखाया. अगर मैं यहाँ 80 रख दूं, यहाँ पे 2 1 2 1, this is your 0, this is your 0, this is your 1, this is your 1, this is your 0. Now if I am telling you just try to find out this output, you can do yes or no, because every, you can take, you can make the matrix of the weights, you can multiply with the input, you can take the biases and then so, add with bias. yes, add with bias. And you if I am saying this is your sigmoid function, okay, sigmoid, Okay. and this is your linear, at last will be linear because I am dealing with the regression problem. So this will be the linear, even though these will be your sigmoid or whatever, ReLU, sigmoid, whatever you want to, you can take any activation function here. Any Okay. activation function. Yes. Yes, sir. So these are the sigmoid, but this will be the linear. At the last, you can calculate this is the value. Yes. Okay. So select a data point. You are selecting one first data point and you are predicting what is the output. Okay, what is the value by help of the forward propagation. Now I am taking, assuming means you are taking first 80 and 8 and the answer is 18. With the calculation, your answer is 18 LPA. Okay. Now you just tell me, this is till now you are doing the forward propagation, but now what is the error value? The error value is, again I am choosing a error. Now you can say, sir, after that, after reaching here, you have to choose a loss function. Loss function may be for the regression problem. You can say I am choosing the mean square error, that is the y bar minus y, that is the whole square. So third thing you have to do, that is the choosing the loss function. That is the most important part of this algorithm. Yes. So you are choosing the MSE.
So what are you doing? 18 minus 3, that is the 15 square. Something 15 square, that is the error part. Okay, this is the error. Now just tell me which is the value you want to change here कि ये 15 से 3 में convert हो जाए, because exact तो आपका 3 है. So what is the thing you will change? Because in the error function you can see this is the y bar, this is y. Which value is fixed? Y is fixed. Yes, you can't change because anyways this is 3. You can't change this thing, but you are Yes. calculating the second thing. You can convert this value, you can change this value only. So Predicted how value. you will? Yes. What are you saying, beta? No, sir. No. Up, we just change predicted value only. Yes, yes, very good. So you can change only the y bar. Okay. So when you are changing the y bar, मुझे यहाँ पे देख के बताओ, this y bar is depend on the which value? किन किन values पे dependent है? This is on this value, this is dependent. Yes or no? Tell me. Yes. Sir. Yes. Okay. On this value, this is dependent. Yes. 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 This is the value, this is dependent on this value. And Yes. this will be multiply of this input, this multiply this multiply this. So these are the two values. इस पर भी आपका ये डिपेंडेंट है. So how many values are there? 1 2 3 4 5. On the 5 values, these are the dependent. Y bar is dependent. If you will change these 5 values, the output of y bar will be changed. Yes, everyone is with me for this thing. So here you can see I am writing the same thing. This W211, W21, okay, both the bits, the bias is 21. This value O11, O11 and O12. Again, you just tell me this O11 and O12 is dependent of O11 कितनी चीजों पर डिपेंडेंट है? यहाँ पे मैं लिखता हूँ B11 पे डिपेंडेंट है. O11 is dependent on B11 and W1. B1 यस, इस पे भी डिपेंडेंट है. ठीक है, ये वैल्यू आई तो इस पे भी डिपेंडेंट है. और सीजीपीआई और आईक्यू पे भी डिपेंडेंट होगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ये भी आ रहे हैं. Input values. Yes, very good. So you can write, sir, this is also dependent B11, W11, this is W211 and some IQ, CGPI. Okay. So इन वैल्यूज पे भी सेम इसी तरीके से 21 निकालोगे तो ये 5-6 वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा. So first I am talking about this. If you want to change this thing, you have to change these value and these value. अब देखो बैक प्रोपेगेशन नाम क्यों आया? हम आउटपुट पे खड़े थे. We are at this point and I want to change this thing. For changing this thing, I am changing this. Yes. For changing this value, I have to change this weights and some IQ और CGPI को हम change नहीं कर सकते because that is given in the a fixed value. So you can't say IQ and CGPI. So you can change some value. So on the basis of that, I can change. But in the reverse direction, we are changing the value. So you can see this part. For changing the loss, try to understand. For changing the loss, we are changing the weights, we are changing the vices, we are changing this thing. So in the reverse direction, or we are propagating in the reverse direction. So that's why we are taking the name that is the back propagation algorithm. Because, but this time, what is you are changing? You are not changing the input. You are changing the loss. So sometimes we can say the errors will be propagate in the backward direction. Yes. So in the forward direction, only the inputs propagate. In the backward direction, the losses or errors propagate. Yes, that part is clear for the back propagation. Why the name of the back propagation is back propagation? That part is clear to everyone. Yes, sir. Everyone is with me? Yes, Yes. sir. Okay. So you understand, sir, I will choose a loss function. I will take I will find the error. Then what? So if you have done this thing, after choosing the loss function, you have to update the W and vices. Most of the time you are seeing you will change the W and vices. This is also depend of the previous Ws and vices. Yes. So then you can use the gradient descent. And what is the formula for the gradient descent?
If you want to new update of W weights, you can use the old weights, some learning rate, and whatever the loss function you are using, according to that, for the different whatever the parameter, you can take the gradient, not partial derivative. You will use the word gradient. So according to that gradient descent, you will find the updated W's. Yes, everyone is clear for this thing. So these are the four steps you will use in the back propagation. क्लियर हो बेटा, किस तरीके से अपडेट होता है इस पार्ट में? एवरीवन इज क्लियर? Yes, sir. Okay. Now I will show you some calculation how it is happening, and some chain rule is here, so you can understand what is the mathematics behind this thing. Yes. So you have understand this part, how it is dependent on this value and this thing. This is the error. Okay. Now I am writing. If you will find the error, the direct error that is written here, W bar minus, sorry, y bar minus y. Yes. Okay. Now the loss function is given to you, that is the MSE, that y minus y bar ka whole square. Yes. Okay. One by one, what is the equation for y bar? You just try to find out at this level. So it will be O11 W multiply with this. This is multiply with this. So first step is written here. Is this okay? O11 W11 second layer. Second, this O12 multiply with this 21 second layer. This part is here. Yes, everyone is with me. And you will add the bias. So bias is here. So the equation is this for the y bar. And this is the fix. Y is fixed here. Okay. Now you will take first W1 new. W1 new. You want to find out this, what is the new value of this thing. So whatever the old value you will take here, you will multiply with this learning rate, and loss function you will use this thing. So and this is W11. It is clear to everyone? Okay. Now I am dividing this part. Directly you can't calculate this DL by DW11 whole square. You can see here, because this W11 again dependent of this thing by bar. So this, if you want to change the loss, you have to change this by bar. Yes. So you can take this thing like this DL by D by bar. Okay. Whatever the dependent thing you can take directly. This L is dependent by bar. Loss is dependent by bar only. So I am taking this partial derivative of loss with respect to predicted value. This predicted value is also dependent directly W11. So I am multiplying this part by bar, multiplying with derivative of DW11. So whatever if you want to calculate this thing, so you can see this part is common. For partial derivative thing, if you will multiply, you can directly get this thing. यहाँ पे हम कट नहीं करते, ऐसा मत समझना कि you can cut this part to this. But according to the partial derivative, if you want to find out this value, you can multiply these both value, because ये assume कर सकते हो कि you are cutting this part. So direct answer will be DL by DW11. Okay, but you can't say we are cutting this thing, because you are getting this value, you are getting this value, you are multiplying this thing, so you are getting the answer. Yes, everyone is with me? Yes. Okay. So till now you are with me. So you can calculate by the chain rule. Okay. So whatever the value is dependent on what thing, you can take the chain rule and multiply this thing, and you can calculate this part. So every time chain rule will be applicable this type of calculations. If you will learn, if you will see in the books or something, so chain rule is given to you. So this is the mechanism to find out the chain rule कि मैं किस तरीके से इस chain rule को find out करूं. So whatever the value is dependent of what thing, so you can take the chain rule. अब next में क्या होगा? DL by DW1. So DW1 यहाँ पे, L यहाँ पे. This is the dependent of this. Again you will take DL by D by 1 or by bar, and this is dependent of this. So you will multiply D by bar upon DW1. So you can get ये दोनों cancel out होंगे एक तरीके से.
then you can get the dl by dw1. ओके, सेम जो जिस पे डिपेंडेंट है आप फाइंड आउट कर सकते हो. इज इट ओके? यस एवरीवन. तो कुछ कैलकुलेशन मैंने करके भी दिखाई है. फर्स्ट यू कैन सी दिस पार्ट. ओके, dl की वैल्यू क्या है? l की वैल्यू ये दे रखी है. यस, तो y बार के साथ में निकाल रहा हूं. सो y बार के मींस ये वाला पॉइंट, ये वाला y तो पार्शियल डेरिवेटिव है, तो इट विल यूज एज ए कांस्टेंट. सो ओनली दिस विल वर्क. तो माइनस तो आ गया, -2 आ गया, माइनस इसकी वजह से आ गया. देन दिस वैल्यू, और ये आपकी पावर 1 हो जाएगा, y बार का 1 हो जाएगा. सो दिस इज द वैल्यू. इफ यू विल गेट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग फॉर द गिवन लॉस वैल्यू, द पार्शियल डेरिवेटिव वैल्यू विल बी दिस. ओके, इसको फाइंड आउट करने के लिए y की वैल्यू जो भी आपकी है, y की वैल्यू मैंने लास्ट में भी आपको दिखाई थी. दिस इज द y वैल्यू एंड यू विल कैलकुलेट द dy बार अपॉन d11. तो 11 वाला केवल एक ही है आप पे, तो O11 यहाँ पे आ जाएगा. ओके, केवल एक ही, ये वाला जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा. दिस इज O11 ओनली. यस, सो कहाँ गया? सो दिस इज O11. इसके बाद आपका O11 आ गया, क्योंकि ये वैल्यू आपकी जीरो हो गई, ये वैल्यू जीरो हो गई. ओनली W यहाँ पे, देन यू कैन गेट ओनली O11. सो वॉट एवर द वैल्यू, -2 y माइनस y बार इंटू O11. इसी तरीके सेकंड कैलकुलेट करोगे, सो दिस वैल्यू विल कम. सो जो वैल्यू आपको मैंने दिखाया है कि यू कैन फाइंड the values here. So आप अपडेट कर सकते हो. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन अपडेट दिस पार्ट. ये पार्ट कैसे अपडेट होगा, ये वाला पार्ट, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट. नेक्स्ट आप इस पे जाओगे तो डिपेंडेंसी फिर से देखोगे. यू कैन यूज द चेन रूल एंड यू कैन फाइंड. अगेन आई एम टेलिंग यू, in the programming, you are not doing this part directly, that will be calculated, but this is the method. You can calculate the values here and this point, this layer. So first, after this, first we will calculate this part, then we will calculate this part. So this is again in the reverse order. You can see you are here and you are going in this way. Because of the loss, you are minimizing the loss. Okay, so this is the thing. Clear everyone? So we are going in the backward direction, that's why we are saying this is the uh, uh, backward propagation. Yes, everyone is clear. But you can do the backward propagation only when you can go till the output, means forward propagation is involved in this. So input will go in the forward direction and error will go in the reverse direction or the backward propagation. Is it clear to everyone? Yes. पीपीटी में आगे कुछ कैलकुलेशंस दिए हैं. इफ यू वांट टू सी, तो यू कैन गो विद दैट कैलकुलेशन कि कौन सा किस पे डिपेंडेंट है. मैंने इस लेयर पे भी करके दिखाया है कि विच वैल्यू इज डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग. सो यू विल फाइंड कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू डिपेंडेंट है. सो लास्ट व्हाट आई कैन से, इफ यू विल सी द स्टेप, तो नॉर्मल स्टेप आपका क्या है? फर्स्ट यू कैन चूज द वैल्यू वॉट एवर द डेटा पॉइंट, और इन द simple word, there are only two steps. First, you will apply the forward propagation. Okay, you will get the y predicted. Then you will find the loss function. Okay, and after that loss function, you will apply the GD. Yes, so these are the only three steps involved in the back propagation. Clear? तो आई बिलीव कि इतने शॉर्ट पार्ट में बैक प्रोपेगेशन को मैंने ट्राई किया है. सो दैट पार्ट इज क्लियर टू यू व्हाट इज हैपनिंग हियर. ओके, मैथमेटिकल पार्ट इज इन्वॉल्व इन दिस, हाउ यू विल इन्वॉल्व, दैट इज ओके. और ये लॉस फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा. इफ नाउ आई एम टेकिंग दिस पार्ट, अगर यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स हो सकता है, सिग्मॉइड हो सकता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लॉस फंक्शंस यू विल यूज फॉर डिफरेंट. इफ यू आर अप्लाइंग for the classification problem, then you will use the different type of, means you will not use the MSE, you will use the different type of loss function. I can say this thing only. Yes, so this is for the linear, for understanding purpose, that is okay. Linear problem, regression problem को समझाने के लिए. Is it okay? But again and again you will apply this rule. So this is the algorithm, this is given to you. First you will take some epoch ले लोगे, फॉरवर्ड प्रोपिगेशन करोगे, लॉस फंक्शन को यूज करोगे एंड एडजस्ट द वेट एंड वाइसेस. सो दिस इज द थिंग. और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 100 में हो, ये 1000 में हो सकता है. वॉट एवर इपॉक यू विल टेक, 7 में भी हो सकता है, 10 में भी हो सकता है. ओके, एवरीवन इज क्लियर विद द बैक प्रोपिगेशन? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अच्छा.
चलो अभी मैं इंट्यूशंस के कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ आप लोगों से, इंट्यूशन करते हैं। अच्छा, मुझे अब आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं मे बी कि सर ये तो आपका हो गया, चलो इनपुट पार्ट, या इनपुट चलो ऐसे ले लेता हूँ कि सम हिडन लेयर्स, चलो, और ये आपका आउटपुट है, दो आउटपुट मान लेता हूँ अभी कि दीज आर द टू आउटपुट्स, और ये कनेक्शन इस तरीके से हो रखे हैं, सम, ओके, यहाँ से ये एवरीवन इज कनेक्टेड, ओके। नाउ यू जस्ट टेल मी कि सर, अच्छा एक चीज याद रखना, कभी भी इंटरलिंक नहीं है, एएनएन में यही है कि दैट इज नॉट इंटरलिंक्ड, ऑलवेज रिमेंबर दैट इज नॉट इंटरलिंक्ड। ये भी एक आगे बनेगा, एक तरीके की एल्गोरिदम आएगी, वहां पे इंटरलिंक भी करेंगे, बट दैट इज नॉट इंटरलिंक्ड टिल नाउ, ओके। नाउ यू कैन आस्क सर, हाउ मेनी हिडन लेयर्स शुड बी प्रेजेंट हियर? यस, दैट मे बी द क्वेश्चन, यू कैन आस्क यस, कोई गैस करेगा कितनी होनी चाहिए? अच्छा, मैं मान लेता हूं कि यू हैव द डेटा, आपने शायद एमएनएसटी का डेटा सुना होगा, जो 28/28 का एक डेटा है, जो आपके नंबर्स का, वन आपका जीरो लिखा हुआ है इस तरीके से, वन लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है, एमनिस डेटा है, एमनिस डेटा आपका बहुत पॉपुलर डेटा है, वह 28/28 का डेटा है। मतलब अगर मैं, इफ यू आर यूजिंग दिस डेटा, देन इनपुट विल बी 28x28। ये कितना आएगा आई डोंट नो, ये 7 6 के करीब होगा शायद, देख लेना जो भी कैलकुलेशन। सो दीज मैनी इनपुट शुड बी देयर, इतने इनपुट्स आपके यहाँ पे हैं एक लाइन में, इस तरीके से 1 से स्टार्ट होंगे और 756 तक जा रहे हैं। These are the inputs. So how many layers you will take? How many hidden layers you will take? First question कि कितना hidden layers लेना चाहिए, कितने nodes लेने चाहिए? तो मुझे ये बताओ, first I just want to ask कि एक hidden layers ज्यादा लेना अच्छा है या उससे ज्यादा hidden layers को लेना अच्छा रहेगा? What is your intuition? Again, this is the intuitive question. Okay? Yes. Different. बताओ, logic wise answer बताओ कि तेज थोड़ा सा लाउड बोलो अपने कैमरे में, मुझे, मैं ऑफ करता हूँ, या यहीं पे बोल दो मेरे इसमें। ज्यादा हिडन लेयर इसलिए नहीं पाए, हिडन लेयर लेंगे कि उससे क्या होगा, हमारे जो प्रिडिक्शन आउटपुट है वो डिफरेंट आएंगे, जिससे हमें पता लग पाएगा कि हमारा जो आउटपुट रिजल्ट है उस पर ये वाले हिडन लेयर का कितना इफेक्ट्स आया, जिससे हम बैक में जाके उसको मतलब हिडन लेयर। ओके, ही इज सेइंग कि सर, मैं कहूंगा कि इफ यू विल टेक मोर देन वन हिडन लेयर दैट विल बी सूटेबल। क्यों ऐसा सूटेबल रहेगा? कि इसका इफेक्ट, क्या कह रहे थे, कि द इफेक्ट ऑफ द वन लेयर will go to the second layer. पता नहीं पर चल पाएगा कि हमारा आउटपुट इस लेयर से सही आएगा भी या नहीं, सो इस ओके, ये कह रहे हैं कि आई डोंट नो सर, कि इन द वन लेयर ओनली suitable for the getting the exact output. If you are taking the more inputs, more hidden layers, that will be more nearer to the output. Okay, other answer, any other thing, any other common answer, the common sense से जो सोच पा रहे हो, because I am not getting the you will not get the exact answer anywhere of this question. So, but if we increase the hidden layer, then the complexity is also increases. Yeah, complexity will increase. One answer is complexity increase करेगी. Okay. Sec. Okay. और what is the guess? Online जितने people ने बताओ. What is your intuition? थोड़ा ये क्वेश्चन, क्योंकि आप जब करने चलोगे then this question will arise कि मैं कितना लूं. That's why I'm asking this question कि क्या ठीक रहेगा. नेहा, लहर, आरती, what is your intuition? अमित? Sir, I think two to three hidden layers. 2 to 3 hidden layers. Okay. Why? Because sir, the data is 28x28, so I think we have to uh, clarify it over there. Okay, anyone can relate the thing. मैंने आपको एक एनिमेशन दिखाया था, in the last class I have shown you one animation, so you can relate the answer with that thing. अमित, कोई आंसर, कोई इंट्यूशन? So वो Yes, yes, reason समझ नहीं आया, two I can say. Okay. दिव्या? Sir, दिव्या, are you there? hidden layer तो yeah, I'm here. My mic wasn't working, so I just Okay, reconnected no once. problem. No problem. Now it is good. Yeah. Yeah, so Because just I am basically, I doing think 5-10 minutes I am doing the discussion thing.
बिकॉज मैं भी एक तरफ बोल के थक गया थोड़ा सा, सो दैट्स व्हाई या। नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैं एक्चुअली ये हो गया था मेरा। तो मैं मेरा सर हिडन लेयर तो डिपेंड करता है जो मेरा इमेज का जो डायमेंशन रहेगा। अगर इमेज का डायमेंशन एक्सेसिव बड़ा रहता है तो उस केस में हमारा हिडन लेयर बनाना सही है। अगर नहीं तो 1 और 2 लेयर में भी काम हो जाएगा। नहीं, आई एम नॉट आस्किंग एग्जैक्ट हाउ मेनी लेयर्स फॉर दिस डेटा, आई एम जस्ट वांट टू इंट्यूटिव आंसर. Please try to वन understand टू in the टू last, वन yeah, टू in टू the, okay, that may be the right answer. Even though some researcher says if you are taking the more nodes in this layer, only in the one layer, that is appropriate. But try to understand what is happening in the animation part. I have shown you only one. This is the hidden layer. This is only the linear separable like this. This is linear separable. The second perceptron, this is the linear separable. Yes, this is the linear separable. Everything is linear separable in this hidden layer. Yes or no? Everyone is clear? Yes. Yes or no? Yes. Okay, when we are combined in this layer, so what is happening? Some structure is will come like this. Okay, some structure. When you will learn about the CNN, you will feel this part. Okay, in the second layer, the more complex thing will come out. Okay, because this layer only separable the primitive, or you can say the linear thing only, कि linear separable ये करता जाएगा, उसके बाद combinate करेगा और उसका combination का जो भी हो रहा हो उसके हिसाब से आंसर देगा. But when you are taking the second layer, some curvy thing will come. Okay, the curve, or you can say not curvy, that is the complex thing, or more non-linear thing will come. ओके, सेकंड लेयर में जितना भी लीनियर, जो भी लीनियर थिंग था उससे ज्यादा नॉन लीनियरिटी को ये कवर करेगा. यस और नो? यस, ये तो आपने देखा था ना एनिमेशन जब दिखाया था. इसी तरीके से Yes, थर्ड sir. लेयर लगाता हूँ, थर्ड लेयर लगाता हूँ, तो दिस इज अगेन डिपेंड ऑन योर डेटा. If your data is more non-linear, then you have to attempt with more hidden layers. If your data maybe some type of you can say linear, then you can use the 1 or 2 hidden layers and you can classify the data. But if the data is more towards the non-linearity, then you have to attempt with the more hidden layers, because more hidden layers will go towards the more complex non-linear problem. Yes. So you by the data you have to decide how many hidden layers you have to take. Yes. Everyone is clear on this point? Logical, because that is not, there is no exact answer for this question. Is it okay? Some people can try with Yes, sir. this only one hidden layer, and he may increase the number of nodes in the hidden layer, or he or she can try. Okay, but I think that is the appropriate thing. और अगर आप खुद एप्लीकेबल करोगे, then you can understand कि मैं जब hidden layers ज्यादा ले रहा था तो मुझे आंसर जल्दी मिल रहा था अगर नॉन लीनियर प्रॉब्लम है. This may be the one logic. Yes, so we are talking about the logic. अच्छा, now एक चीज और देखी हमने, that thing, इस लर्निंग रेट को. यस, इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, ये आपके जीडी में आया था लर्निंग रेट. इसको कैसे डिफाइन करोगे? इट शुड बी हाई, इट शुड बी लो. ये तो है 0 से 1 के बीच में लेते हो, वो तो ठीक है. सो आप 1 के करीब लोगे या 1 से कम लोगे? अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो इसको छोड़ते हैं, अभी इसको बाद में लेंगे. आपका कुछ इस तरीके से जनरेट होके आता है, डब्ल्यू न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस समथिंग एंड दिस लॉस फंक्शन इनटू सम डब्ल्यू कर देता हूँ. ओके, डब्ल्यू. ओके, so if the value, most of the time you will get the value in between 0 to 1, और आप इसकी भी स्मॉल वैल्यू आपको मिलती है 0 1 1 0 1 2, इस तरीके से 0 0 0 1. ओके, अगर आपके पास बहुत सारी लेयर्स हैं, अब समझना कि इसी क्वेश्चंस में आपके पास क्या 2 लेयर्स थी, मान लो यहाँ पे 5-6 लेयर होती, तो व्हाट इज हैपनिंग एट एवरी लेवल, दिस इज चेंजिंग एंड यू आर गेटिंग द वैल्यू दिस थिंग एंड यू आर मल्टीप्लाइंग दिस वैल्यू 0 0 1. अगली वैल्यू भी आपकी क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि आपका क्या है, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, वेट्स मल्टीप्लाई होते हैं ना, जो भी अपडेट हो रहा है, दैट इज 0 0 वेट्स को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 0 0 0 1. ओके, और यू कैन से
सर अगर मेरा एक आंसर ये आया W न्यू इज इक्वल टू W ओल्ड माइनस ईटा की वैल्यू मैंने 0.1 ले रखी है 0.01 इसकी लर्निंग रेट की एंड दिस आंसर रीच टू द 0.0001 यस ये आपका आंसर जनरेट हुआ तो आपका इस W ओल्ड में कितना चेंज आया दिस W ओल्ड माइनस पॉइंट कितना हो गया 2 0 और बढ़ा देता हूं इस 4 के आगे ठीक है only this change is coming yes everyone is getting this point yes Yes, sir. hello Yes, sir. yes Yes, sir. Yes, sir. so sometimes this is the problem of the gradient descent okay or you can say that is the vanishing gradient एक word होता है that is the vanishing gradient एग्जैक्टली ये तो मैं एक चीज दिखा रहा हूं वैसे क्या होता है जब पूरा अप्लाई करोगे तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ग्रेडियंट एक दूसरे से ओके तो ये वैल्यू इतनी छोटी हो जा रही है कि किसी भी इपॉक में इफ यू आर डूइंग दिस थिंग देयर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज इन डब्ल्यू ओके तो आप अप्लाई तो कर रहे हो ग्रेडियंट डिसेंट दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन डब्ल्यू तो आपको लग ही नहीं रहा कि आपका कुछ अपडेट भी हो रहा है तो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन यू कैन से दैट इज द वेनिसिंग ग्रेडियंट और वेनिसिंग ग्रेडियंट को कैसे सही करते हैं क्या करते हैं दैट इज द डिफरेंट स्टोरी बट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर गेटिंग द मोर small value and you are multiplying that thing that vanish gradient comes in the picture अच्छा यहाँ पे मैं उल्टा करता हूँ अगर मेरी इसकी वैल्यू अगर आपकी 100 × 100 ऐसे कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ वेट कर रहे हो इस तरीके से या 1000 वैल्यू आ गई इसकी एंड यू आर चेंजिंग सम W की वैल्यू आपकी 0.7 और आपका ये 1000 से ऊपर हो गया ठीक है देन यू आर गेटिंग नेक्स्ट वैल्यू दैट इज द 1000.7 या 10 to power 6.7 something like this okay 10 to power 7 इसमें अगर 0.7 ऐड करना है something like that so लास्ट स्टेप में 0.7 है नेक्स्ट स्टेप में इतनी बड़ी वैल्यू है दैट इज द एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट ये प्रॉब्लम हमें मिलती है CNN में कभी कभी यू विल गेट एक्सप्लोडिंग का जब देखोगे एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट दैट प्रॉब्लम विल अकर इन द RNN okay recurrent neural network padhoge then this problem will occur okay so remember you have to means make your neural network like that means this problem and this problem should not comes in the picture okay क्योंकि इससे आपका कोई फायदा नहीं होगा if your system in the loop of vanishing gradient so there is no updation if your system in the exploding gradient again there is no benefit or doing this thing because आप क्या कर रहे होगे एड्रप्टली होगा आपका सिस्टम यहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा ऐसे वर्क करना स्टार्ट कर देगा मिनिमा तो उसे मिलेगा ही नहीं इस केस में आपका क्या होगा छोटे केस में वो इतनी धीमे बढ़ेगा कि पहुंच ही नहीं पाएगा मिनिमा तक कभी भी आप लगा रहे हो 10,000 इपॉक लगा रहे हो वो पहुंच ही नहीं रहा तो इस तरीके के सिस्टम में भी हमें कोई मतलब नहीं होता है सो वी डोंट यूज दिस टाइप ऑफ थिंग so two words remember this thing that is a vanishing gradient one is exploding gradient that part is clear to you everyone yes or no yes Sir, so yes. that is the problem of gradient descent so hidden layers I have decided again the this thing you will if you will apply this thing learning rate then you will understand कि इस लर्निंग रेट को भी समटाइम्स यू हैव टू अपडेट बट नॉर्मली हम इसको अगेन डेटा के हिसाब से इसको चेंज करते हैं और सर यू कैन डू सम एक्सपेरिमेंट विद दिस लर्निंग रेट एंड यू विल सी कि हर इपॉक के बाद हम लोग फाइंड आउट कर देते हैं कि कितना लॉस आ रहा है अगर आप इसको भी कुछ रेंज में चेंज करके देख सकते हो कि मैंने 0.01 से स्टार्ट किया और इसको 0.1 तक ले रहा हूँ और व्हाट इज द लॉस लॉसेस आपके कितने जनरेट होते हैं जहां पे कम लॉस आता है उस लर्निंग रेट को हम लोग एक्यूरेटली ले लेते हैं या फिर कोई एक्सपर्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा दे कैन डिसाइड कि मुझे कितना लर्निंग रेट लेना है यस दैट पार्ट इज क्लियर तो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ कि दैट पॉइंट्स इज यूजफुल फॉर द मैनेजिंग ANN टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ओके कि ANN की एल्गोरिथम में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं तो दिस पार्ट इज क्लियर अच्छा मैं ग्रेडियंट डिसेंट कई बार वर्ड यूज किया है मैंने आपको कभी ये नहीं बताया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट कोई जानता है तो दैट इज वन इज बैच ग्रेडियंट डिसेंट one is mini sorry not mini that is stochastic
स्टोकेस्टिक की स्पेलिंग देख लेना यार, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। ठीक है, नाम ही है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। ठीक है, एंड शॉर्ट थर्ड, फॉर्म में एसजीडी लिख दीजिए, आसान होता है, हाँ नॉर्मली एसजीडी यूज लिख रहा करता है हूँ, एसजीडी। एसजीडी लिख रहा हूँ। यस, एसजीडी, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। एंड लास्ट वन इज मिनी बैच। किसी को आइडिया है इन चीजों का, व्हाट इज हैपनिंग इन द बैच? ये केवल अभी समझाने के लिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मिनी बैच करता हूँ इसको, मिनी बैच। सो व्हाट इज हैपनिंग इन द बैच? So what, okay, just I am relating your classrooms. If you have one batch, okay, and you are applying this algorithm, means any algorithm on total on this batch, means if you have the 30 student and you are applying to the 30 student directly one by one, okay. So and after that, when you are applying the on the 30 student and after that you are calculating the error or something, okay, then you can say that is the batch algorithm. So how much data is given to you? Means if your data is given, 7,000 data is given in the first epoch, what you are doing, you are applying on the 7,000 data set, and after that you are getting the error on this value. Then again you are reducing and again you are applying for the 7,000 data set. Then this type of algorithm when you are using, you can say that is a batch algorithm. You can use most of the time, if your data set is less, then you can use this type of gradient descent, batch gradient descent type of thing. Okay, what is the means of stochastic gradient descent? What is happening? Common sense से सोच सकते हो. If you have the data set of 30, okay, one by one, on the first student I am applying this and I am finding the error. Okay, whatever the error, you can applying this part in the second student, you can apply on the third student, like, or at every data you are trying this thing, that is the stochastic gradient descent. Okay, it at every level you are finding the errors. Yes, this type of thing you are doing the stochastic gradient descent. What is the means of mini batch gradient descent? What will happen here? Maybe data is 1000. Okay, what you will do, first you will divide the data into the 100 bunch or 10 bunch. So 100 के आपने क्या करे, 10 bunch बना लिए. So this is dividing is the batch. Then you will apply the SGD here. Okay, then you will apply the SGD here in this part, So you can say that is the mini batch gradient descent. Yes, फर्स्ट यू विल मेकिंग सम बैच, तो मिनी बैच जो आपका बड़ा डेटा है उसमें मिनी बैच बना लेते हो. तो दिस टाइप ऑफ थिंग, सो वी कैन यूज द ग्रेडियंट डिसेंट इन 3 टर्म्स. When you will apply the ANN algorithm, these are the hyperparameters. Okay, hyperparameters कोई बताएगा क्या होते हैं? एल्गोरिथम को यूज करते हो तो हाइपर पैरामीटर क्या करते हैं? जब केरास यूज करोगे या सम अदर, जब अभी भी यूज करते हो ना, बहुत सारे एसके लर्न में यूज किया होगा. हाइपर पैरामीटर्स किसे बोलते हैं? एनीवन? So you have to tune this part. Means sometimes you can understand whatever the value the user is given to the system, that is the hyperparameter. You have to decide that value कि आपको कौन सा gradient descent लेना है, batch लेना है, STD लेना है, mini batch लेना है. You are deciding. So again you can say that is the gradient descent is the hyperparameter. Again, how many layers you will take, hidden layers you will take, how many nodes you will take. These are the hyperparameters. Okay, so these are the hyperparameters. So learning rate, again the hyperparameters. So I am talking hyperparameters you will use in the ANN algorithm. एक और आएगा आपके सामने, that is the optimizer. So I will take this topic. ANN का एक अच्छा टॉपिक होता है, कम लोग पढ़ाते हैं. I will teach you, मुझे टाइम मिलेगा तो पक्का पढ़ाऊंगा. So that is the optimizer thing. So normally हम लोग एडम यूज करते रहते हैं, बट देर आर डिफरेंट क्रॉस वैलिडेट और बहुत सारे हैं, अभी मुझे नाम चारों के नहीं याद आ रहा, बट ठीक है. एडम मोस्टली यू आर यूजिंग द एडम थिंग. ओके, सो 4 पैरामीटर, 4 ऑप्टिमाइजर आपके होते हैं. ओके, कौन कौन से? Yes, random. हाँ, रैंडम है, मतलब नॉर्मली just you will see that Adam will you are using. Okay, I will teach this part. Okay, no problem. So optimizer, again the one hyperparameter. Yes. So again and again, for accuracy purpose or reducing the loss, you have to adjust these hyperparameters and you will get the right value. Or you can means converts your algorithm in smaller epochs, you can say.
ओके, सो दैट इज द आइडिया मीन्स। अच्छा, एक चीज और पूछता हूँ, इफ कुछ ग्राफ बना रहा हूँ, कलर में चेंज कर देता हूँ, समथिंग, दिस इज योर ट्रेनिंग एंड दिस इज योर टेस्टिंग. Okay, this green color is your training loss, or you can say okay, training loss, or this is your testing loss. ये ग्राफ आपको दिया है, तो what is the prediction after seeing this type of graph? Sometimes most of the student who is working, you are doing research in your domain, so कुछ ग्राफ इस टाइप के आपके आते होंगे. Okay, so what is the prediction when you are getting this type of graph? What is your predictions? ये in terms में बताओ, that is the overfitting, underfitting, or this is the good graph, or we can means take this is okay. So what is the predictions after seeing this type of graph? It looks like it is a overfitting because training is very good, but testing has a huge loss over there. Very good, very good. So you can see when there is much difference between the training loss and the testing loss. Here you can see the, because if you are saying this is good, training is good, this is going towards 0, but anyhow the testing data is not going towards 0. So that is difference between these two, training and testing. So whenever this type of thing is occurring, the overfitting is coming. And most of the time only you are worry about the overfitting. Underfitting तो आपकी आती नहीं है सिस्टम में. अंडरफिटिंग अगर आ रही है तो वो उस टाइप का डेटा होता ही नहीं है आपके पास. तो अंडरफिटिंग को कभी आप सॉल्व नहीं कर रहे होते हो रिसर्च में. So again and again you are dealing with the overfitting. Whenever the overfitting comes in the picture, you have to reduce this part. कि आपका ग्राफ ये ना होके अभी इसके पास में आ जाए कहीं भी इस तरीके से, कुछ ना कुछ ऐसा आ जाए कि ये जो डिफरेंसेस है that should be covered up. Yes, clear everyone? Yes, no तो बोल दो यार. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so tomorrow I will be on leave, but I will take the class. मैं घर से क्लास ले लूंगा, आपकी तो ऑनलाइन है. So what will happen? I will take the class. मैं आपको असाइनमेंट दूंगा. फर्स्ट एक कोड समझा दूंगा. Okay, after that I will give you 1 or 2 assignments जो आप घर से कर लेना. एक कोड में आपको प्रॉपर समझा दूंगा कि how will deal with this thing. मैं अभी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ. Just wait. कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी देनी होगी तो. Okay, stop. Okay.